Hello and welcome to AI assisted full stack development course. Welcome to Dhanishka Tech Academy. So, in this video, we will continue our variable and input output operations. So, variable. So, by definition, what variable means? Variable का मतलब क्या है? Okay. So, variable is something in which we can store some value, we can allocate a memory, we can store some value into that memory, and we can use that for printing, for some arithmetic operation, for reading purpose. So, basically, वेरिएबल का मतलब ये होता है कि वेरिएबल जब हम डिफाइन करते हैं सी लैंग्वेज में तो कंपाइलर इंटरनली मेमोरी एलोकेट करता है उस वेरिएबल का यूज हम कर सकते हैं कोई वैल्यू रीड करके उसे असाइन करने के लिए उसका यूज हम अरिथमेटिक ऑपरेशन में कर सकते हैं और उसकी वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं बिकॉज वी कैन चेंज द value of the variable. That's why we call it as a variable. So let's play around little bit more with the variable, and now let's create a new program in which we will try to swap two numbers. Swapping of two numbers means basically, let's say you have declared one integer a and another integer as a b, or let's say first and second are two integers. We will ask user to enter the value of first and second. We will print those values and then we will implement the logic to swap these two numbers with the help of third variable. So we can easily implement this program, but the concept behind this program is that variable by definition we can change its value. So that's what we will learn in this program. So let's start. Let's begin. File alt f new uh, file save as swap.cpp and save. As usual, our first line will be hash include stdio.h followed by hash include conio.h. So as I told you earlier, जैसे कि मैंने पहले कहा था, it is for standard input output and console input output. Again, integer main opening curly braces, and this one, usual format of this program is like return 0, and we will end every statement with semicolon. So yes, this is how we will return 0 value. Okay, so first of all, let's define two variables of type integer. Integer first, integer second. Okay, so we will ask user to enter the value of first variable and enter the value of second variable, and we will print those. Then we will swap them, and then we will again ask user, and then we will again display user the interchanged values of these two variables. Okay, so print here, please enter first value. Sorry for typo if any. Okay, and scanf percentage d address of first. Okay, then we will ask user to print second variable. Oh, I missed the double quotes. Print printf function works when the string inside it is enclosed in double quote. printf function तभी काम करता है जब जब हम उसके अंदर जो भी string देते हैं वो double quote के अंदर देते हैं. Again, scanf
percentage d address of second. Printf first number equals to percentage d and second value equals to again percentage d because both of them are integer, comma, comma, second. Okay, now we will swap their value with the help of third variable. That's why we will need a temporary variable. Temporary variable. The swapping logic is simple. Okay, let's say your first number is 10. Okay, so we will allocate first number's value inside temp. Okay, so temp becomes 10. Now let's say second number is 20. Then first we will assign to this. That's why let's say temp was initially 0, so temp becomes 10. Now 10 first has 10 value, it becomes second means 20, and here because we preserve the value there 10. Okay, so after swapping again we will print this. Okay, after swapping first equal to percentage d and second equals to again percentage d double quote comma first comma second. Get ch and then return. Okay, so this is how our program will look like. Okay, so let's compile this. Alt C, compile. There is one error. Function should return a value. Okay, so let me remove this. Alt C, compile. Oh, now there are two errors. This is typo. Zero error, zero warning. Okay, Alt R run and we run this. Please enter first value. So let's say I am entering 10. Okay, please enter second value. So let okay, 1 second. Alt R run. Okay, uh, 1 2 1 and 2 are first value after swapping. Okay, so let me add clear screen at the beginning. Okay, so yeah, so here what happens? We are including standard input output output.h and conio.h. You know, for the reason of printf and scanf belongs here in the standard input output.h file, and clear screen get ch they belong in they are from this conio.h. Okay, so that's why these two lines are there. Then we have a main function. The main function, as I discussed, it is the starting point, and the program execution begins here. then we have defined three integers. हम लोगों ने तीन integer define किए हैं. Integer first, second and temporary.
Okay, the purpose of this program is to swap two numbers. Okay, हम यूजर से दो नंबर लेंगे और उन दोनों नंबर की वैल्यूज को स्वैप करके बताएंगे. एंड द रीजन बीइंग हियर इज we are actually exploring variables in C language or variables in any language. The moment we say variable, that means उसके लिए मेमोरी बनती है सिस्टम के अंदर. फिर उसके अंदर हम कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं. उसका यूज भी हम कर सकते हैं किसी अरिथमेटिक कैलकुलेशन में या किसी और जगह पर, और उसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है. तो that's what we are learning from this swapping program. Okay, so first I am asking the end user to enter the first value using printf statement. The clr ser is like normal, it will clear the console screen. Then please enter first value and we are storing that value into the first variable. Let's say user enters 10 value. Okay, then we are asking user to enter second value and we are storing the second value in second. It is the name of the variable. These 1 2 3, these are the name of the variables. So now I am just displaying user that hey, these are your first and second. So you see here the syntax looks like this: printf double quote percentage d. These percentage d and percentage d will replace by first and second. That means if user enters 10 and 20, it will show first equals to 10 and second equals to 20. Now here is a logic for swapping. Okay, swapping logic is simple logic. We have declared a third variable, temporary variable. So right now, its value will be a default value. So let's say its value will be 0. Okay, at the beginning. So temp will get value of 10. Then first number, which is 10, will get value of second number, that means 20, and second number will get value of 20. So here, for example, temp will become 10 and first is also 10. At this line, first will become 20 as well as second is also 20. Now we want to swap second value as well. So here second will become 10 because in the temp, in the first line itself we have allocated the value of first to 10. इसका मतलब है अभी यहाँ पर ये जो लाइन है, यहाँ पर मैं यूजर को वही दिखा रहा हूँ जो उसने मुझे दिया था, फर्स्ट इक्वल टू 10 एंड सेकंड इक्वल टू 20. ये परसेंटेज डी एक्चुअली जब प्रोग्राम रन होगा तो वो उनको रिप्लेस कर देगा इन दो वेरिएबल से. यहाँ पर मैंने स्वैपिंग का लॉजिक लिखा है जिसमें आपको दिखेगा कि टेम्प नाम के वेरिएबल में इनिशियली मैंने फर्स्ट की वैल्यू स्टोर की है. तो टेम्प यहाँ पर क्या बना, 10 बना ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद. और फर्स्ट तो ऑलरेडी 10 था. वी आर अज्यूमिंग कि यूजर ने 10 और 20 दिया है. 10 और 20 यहाँ पर वैल्यूज ऐड किए हैं. लेट्स से कि यूजर ने यहाँ पर 10 ऐड किया था और यहाँ पर 20 ऐड किया था. यूजर कुछ भी ऐड कर सकता है. इट इज नॉट नेसेसरी कि वो 10 और 20 ही ऐड करेगा. वो 100 200 -50 -20 कुछ भी ऐड कर सकता है वो यहाँ पर. ओके, तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम यहाँ 10 20 ले रहे हैं. अभी जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट की वैल्यू भी हमने चेंज कर दी, सेकंड की वैल्यू हमने फर्स्ट में डाल दी. तो फर्स्ट 10 की जगह 20 हो जाएगा और सेकंड तो ऑलरेडी 20 है क्योंकि सेकंड को हमने इस लाइन तक चेंज नहीं किया. नाउ in this third line, second की वैल्यू हम 10 कर देंगे with the help of this temporary third variable, and we will, after swapping, we will again write the same line जैसे हमने ऊपर लिखी थी वैसे ही लाइन हमने यहाँ लिखी है. और ये ऑर्डर आप देखना, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को ही मैं प्रिंट कर रहा हूँ, पर इन दो लाइंस में फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू चेंज हो गई है इन दो लाइंस में. ओके, सो लेट्स फाइनली वी आर रिटर्निंग 0 बिकॉज हमारा मेन मेथड इंटीजर रिटर्न करता है. लेट्स रन दिस प्रोग्राम. फर्स्ट लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम, अगर उसमें कोई एरर तो नहीं है. ओके, यहाँ पर कोई वार्निंग नहीं है, कोई एरर नहीं है. देयर इज नो एरर, देयर इज नो वार्निंग.
I am now free to run this program. Oh, just a minute. Okay, sorry. Alt enter, Alt R and run. Okay, so please enter the first value. मुझे वहां पे थोड़े स्पेसेस देने चाहिए थे. तो लेट्स से कि मैंने 100 ऐड कर दिया. प्लीज एंटर सेकंड वैल्यू. लेट्स से कि मैंने 200 ऐड कर दिया. ओके, फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू यहाँ पर उसने दिखा दिया है कि 100 एंड सेकंड वैल्यू इज 200. एंड लेटर ऑन उसने हमें दिखाया कि आफ्टर स्वैपिंग भी उसने हमें वो वैल्यूज दिखा दिए. ओके, यहाँ दो विंडोज ओपन हुए हैं. लेट मी क्लोज दिस.